Maldives আৰু ছিংগাপুৰত যে আপোনালোকে দেখা পায় ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্টছ বনোৱা আছে, চি পৰ্টছ বনোৱা আছে, ইকনমি বুষ্ট হৈ আছে, টুৰিজম এট্ৰেক্ট কৰি আছে. চ' কেন উই ডু অল অফ দেট ইন ইণ্ডিয়া এজ ৱেল? হাউ এবাউট আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ? ইজ ইট পচিবল? হোৱাট আৰ দ্য কনচিকুৱেঞ্চেছ? All of this we are going to discuss in today's current affairs itself কাৰণ আজি এইটো বিষয়ে ইয়াতে আৰ্টিকল অলৰেডি আহিছে দ্য হিন্দু নিউজ পেপাৰত. চাইনাই ৰাছিয়াৰ লগত ইয়াতে বেছি অকণমান দোস্তিটো বঢ়াই আছে. এই দোস্তিটো আমাৰ ওপৰত কিবা ইম্পেক্ট কৰিব পাৰে নেকি? ৰাছিয়াৰ কাৰণে কিবা লাভ আছে নেকি? চাইনাই কিয় ইমান দোস্তি কৰি আছে? এই সকলোখিনি আমি সহজ সৰল ভাষাত আলোচনা কৰিম, ডিছকাছ কৰিম. লগতে MCQ আৰু মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যনো চাম. মেপ অফ দ্য ডে আৰু টেবল অফ দ্য ডে ফেক্টটো আমি আজিৰ ক্লাছত পঢ়িম. নমস্কাৰ. 8 এপ্ৰিল 2023 কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ডিছকাশ্যনলৈ মই অন্তৰা ভূঞা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ. ইয়াতে দ্য হিন্দু নিউজ পেপাৰৰ আজি 8 এপ্ৰিলৰ এইটো এটা স্নেপশ্বট হয়. আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি প্ৰথমতে মেপ অফ দ্য ডেৰ পৰা. ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে ছিকিমত যিটো ইনচিডেণ্ট হৈছে এভালাঞ্চৰ, সেইটো নিশ্চয় নিউজত দেখা পাইছে, আমি কভাৰ কৰিছিলোঁ. এতিয়া ছিকিমত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাছ এটা এক্সামত আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে নথুলা পাছ ক'ত ছিটুৱেটেড আছে বা নথুলা পাছে কোনটো জাগাৰ লগত কানেক্ট কৰে. চ' এজ ইউ কেন চি ইন দিছ মেপ, ইয়াতে এইখিনি জাগা গেংটক হয় আৰু ইয়াৰে পৰা ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইখিনি নথুলা পাছ হয়. এইটো See, Nathula is a mountain pass in the Himalayas connecting Sikkim with Chumbi Valley of the Tibetan Plateau. এতিয়াতো চাইনাই এইফাললৈকে কৈ আছে যে টিবেটটো সিহঁতৰ হয় বুলি. So you can see that this is the region of Chumbi Valley and Sikkim is being connected to Chumbi Valley by which pass? By the Nathula Pass. As of now, there are 3 open trading border posts between China and India. So the 3 border posts which are open trading border posts as of now, they are number 1, Chumbi Valley, number 2, Shipkila already huda hoise examot. Shipkila kot ase? Himachal Pradeshot ase Shipkila. And then you have Lipu Lake kot ase? Uttarakhandot ase Lipu Lake. নিউজত আমি কিছু সময় আগতে দেখা পাইছিলোঁ উত্তৰাখণ্ডত লিম্পিয়াধুৰা, লিপু লেক এণ্ড কালাপানী নিউজত আছিলে কাৰণ নেপালে যে মেপ আগতেও এইটো এটা তাতে পৰ্ট্ৰে কৰাইছে. চ' দেট ইজ ৱাই দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট. Next you see Nathula Pass is also important because yate historically eta Buddhismor karne jetia Chinaৰ পৰা মানুহ ইণ্ডিয়া লাগে আহিছিলে তেতিয়াও এইটো এটা important site আছিলে. And even in modern times also Hindu and Buddhist pilgrimages happened through this particular pass, and it was reopened in 2006 to shorten the travel distances. Okay, now see, it is also important because এই পাছটোতে ইয়াতে কি হয় যে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি আৰু সিহঁতৰ পিপলছ লিবাৰেশ্যন আৰ্মি অফ চাইনা ইহঁতে ৰেগুলাৰ ইণ্টাৰেকশ্যনছ ইয়াতে কৰে. ইউ কেন চে পাৰ্চনেল মিটিং টাইপ ইয়াতে কৰে. চ' দেট ইজ ৱাই অলছ' ইট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট টু ইম্প্ৰুভ দ্য ৰিলেশ্যনছ অফ দি আৰ্মি. Now let us come to the next important question. See, the 103rd birth anniversary of Bharat Ratna Pandit Ravi Shankar has been celebrated on April 7, in which year he was awarded by the highest civilian award Bharat Ratna. Yate kuntu bosorat Bharat Ratna award to dia hoisile? Bharat Ratna was given to him in the year 1999. Pandit Ravi Shankar agote bahut exams ot hudise. You see why he is important, because he is a renowned composer and sitar player. This question was asked, kuntu instrument bojai? So he is renowned sitar player. Okay, now his guru name can also be asked. Tehetor guru kun hoy? Tehetor guru asile Alauddin Khan. So Alauddin Khan is also important here. Also remember the third point, that he has been the UNESCO Goodwill Ambassador. যেনেকে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা Goodwill Ambassador আছিল নহয়, তেনেদৰে he was also the United Nations UNESCO Goodwill Ambassador. Please note here, ইয়াতে এটা বস্তু আপোনালোকে নোট কৰিব পাৰে যে বৰ্তমান Rosie D. Palma is the UNESCO Goodwill Ambassador in 2022. Okay.
Now let us proceed to the front page article of the Hindu newspaper. Etu article ami kyo sai asu yar pora ki question khuda hoise ami discuss korim. Agote article to sai lo. Etia sauk yate koa hoise je 3 weeks ago jitu case asile itu 571 asile eta 571 or pora daily cases 4000 lage jump korise. And also in news we have seen that May June it is going to see the peak aru barhi jabo covid cases etu amar news ot ahise. Now see why we have picked up this article. There is a different reason ami kyo article to uthaisu karon UPSC 2021 ot GS paper 4 point of view pora tamne GS paper 4 kunkhon hoy ethics hoy. Ethics ot eta question khuda asile apnalke screenshot loi lobo pare. Ei question to ami hekhor fale etu question apnalokor logot aru okoman discuss kori lom aru as a practice question apnalke etu practice koribo pare. বৰ্তমান ডিসকাস কৰিলে বহুত দিহলিয়া হৈ যাব গতিকে আমি এটো লাষ্টৰ ফালে সময় হলে মিলাই চাম ওকে another question which we are going to practice now azir mains practice question ami eto question sam aru eto question kyo lua hoise karon ami dekha paisu je India, Bhutan, China, yet again there has been article and then China, Russia also there has been article. Etia Bortoman SEO is anyhow in news, so that is why we are going to look at this question. Critically examine the aims and objectives of SEO. What importance does it hold for India? It UPSC 2021 or question. Okay. Now let us have a quick look into what was in the news. Yete news at ki asile you see spotlight again on Doklam issue was in news. We have already discussed, so spotlight again on Doklam, India Bhutan relationship and why China remains the dragon in the room. Bhutanor yate king ki koise je he has said that all the border disputes are very close to getting resolved mane resolve hoi jabo Beijing or logot jiman khini border dispute ase and there is no Chinese incursions in its territory kunu Chinese incursions nohua buli koise. India Bhutan relations are very special but China remains the dragon in the room. India aru Bhutan relationship to bahut strong ba bahut special to hoy kintu yata eta dragon already bohi ase kun bohi ase China and China remains the dragon in the room. Okay, another article regarding China that was published a question to answer logar ami discuss korim that is see the former foreign secretary Shyam Saran writes that China is firmly in Russia's corner. China sobotke beshi dosti kar logot korise Russia logot korise aru yate Russia logot firmly hiot ase buli tenekwa ta hiyote dekhaise. So what the author is saying that India needs to take note. We should note this and we should see what they are doing. Ye log aisa kya kar raha hai, how does it impact India? So that is what is important for us. You see, China has the capacity to limit Russian engagement with India. Why we should be concerned or what note should we take? We should take a note that what if China Russia jodi influence kori dia that a defense ot ami Russia pra bhalekhini bostu yate we have a good relation. So what if they try to influence Russia including in the defense sector? A article to moi tinta bhagot bhag kori loisu. The first one is your they have given a joint statement, that is China Russia joint statement, that is no limits partnership mane ekdom ye dosti humne hi torenge type or aru kono limit nai dosti are man no limit partnership that we are going to carry forward ekdam pura pakka wala partnership. That is what China and Russia का joint statement has said. They promise हम वादा करते हैं कि no limit partnership. Then they have said no forbidden areas of cooperation. जहाँ cooperate कर सकते हैं हर scenario में economic, political, social सब हम लोग cooperation करेंगे. ऐसा दोस्ती यारी चाइना और रशिया बोल रहे हैं कि वो लोग रखेंगे. That is the joint statement. Okay, I hope you are able to hear because my voice is not that much COVID or case by 7 I am fine but my voice is a little bit disturbed because of cold.
Okay, see, they shared the view that this relationship has gone far beyond the bilateral scope and acquired critical importance for global landscape and future of humanity. So this, they are saying that ये जो joint statement वो दोनों ने इशू किया कहाँ पे, विंटर ओलंपिक्स में. तो रशियन प्रेसिडेंट हैज विजिटेड, नो, सो देयर दे हैव गिवन दिस स्टेटमेंट. सो दे आर सेइंग कि ये फ्यूचर के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी, इंसानियत के फ्यूचर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ सी, क्या इससे क्या होगा, वाई दिस इज हैपनिंग एंड व्हाट रोल डज इट हैव टू प्ले. सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन चाइना work as a mediator between the Russia and Ukraine? কৰিব পাৰিব নেকি? ইমান দোস্তিয়াৰি হৈছে ইহঁতৰ, এই মিডিয়েটৰৰ ৰোল কৰিব পাৰিব নেকি? Yes or no? Now see, here you can say that China, is it neutral or is it already too much friendly only with Russia? इसका तो क्लियर है कि ये रशिया का ही पार्ट ले रहा है. So it is not being able to play the role of a mediator. Right? Next, see, independent relations with other. Is it possible in this case for, say, Russia? Will Russia be able to maintain independent relationship with India? या फिर अगर चाइना का এই যে সৰু থাকোঁতে কৈছিলে যে মোৰ মাতামাতি নাই, মোৰ ইমান ভাল দোস্তিয়াৰি নাই, গতিকে তুমিও নামাতিবা. So what is going to happen? Will there be independent relation or ইহঁতৰ ভাল মাতামাতি নাই কাৰণে বোলে তুমিও নামাতিবা টাইপ হৈ যাব. এতিয়া বৰ্তমানটো we have good relations, but what will happen in this case if you will become more dost with him? ইহঁতৰ দোস্তিটো বাঢ়ি গ'লে, ইহঁতৰ দোস্তিটো যেনেকৈ বাঢ়ি গৈছে, একদম পুৰা কি বুলি কৈছে বোলে all partnership আছে and they will remain together. So what will happen if influences, right? Next, see, advantage partnership কাৰ কাৰণে বেছি advantages হয়, এইটো কাৰ এডভান্টেজটো ইয়াতে বেছি হয়. আমি চাইছিলোঁ নহয়, ইণ্ডিয়াই যে ৰাছিয়াৰ পৰা ক্ৰুডটো পাৰ্চেজ কৰি কিনে वी आर एबल टू सेल इट, हम लोग यहाँ से परचेज करके बेच रहे थे, याद है. सो नाउ सी, चाइना विल परचेज दिस एट अ हायर प्राइस. सो एडवांटेज रशिया के पास जो ऑयल है वो तो 8% चलो बढ़ा है, नेचुरल गैस तो 50% बढ़ा है. इसका फ़ायदा कौन इधर से उठाएगा? चाइना को मिलेगा, इसका एडवांटेजेस पार्टनरशिप रहेगा उसके लिए. Next, see, there is a pipeline from Russian Arctic gas field to Yamal to China through Mongolia. तो already Russia से China pipeline है Mongolia के through. So that is an advantageous position for China. Next, China is conventing a summit. कि रशिया क्यों कर रहा है, तुमको क्या मिल रहा है? हाँ, तो रशिया इसलिए क्योंकि यूक्रेन के साथ वॉर में ऑलरेडी रशिया को थोड़ा सा सब लोग देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे. सो चाइना एक समिट ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है, जिसमें सारे सेंट्रल एशियन लीडर्स को बुला रहा है, फ्रॉम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन मे इटसेल्फ दिस ईयर. तो वहाँ पे क्या रहेगा, अगर चाइना के यहाँ पे सब लोग आए हैं और चाइना रशिया को थोड़ा सा ज़्यादा भाव दे रहा है, तो सब लोग रशिया को भाव देंगे. Yes or no? So this is how Russia will be benefited, right? So however, एक चीज और है that if Russia, अगर आप किसी और के यहाँ पे जाके पहले से बैठे तो क्या आपका रोल डिमिनिश हो जाएगा? क्या चाइना रशिया में से अगर हम लोग देखने लग गए कौन, तो क्या चाइना ज्यादा ऊपर और रशिया का रोल थोड़ा सा डिमिनिश किया जाएगा? So that might be a problem for Russia here. However, as of now, you can say this is why probably China is doing this partnership. Okay, and why are we concerned? Because what if China ने रशिया को बोला कि तुम इतना भी अच्छा दोस्ती मत रखो, क्रूड ऑयल मेरे को बेचो, ज्यादा उधर ना बेचो. So China might be influencing. That is why we are bothered. Okay, अच्छा, what is the power of Siberia 2? ये क्या है power of Siberia 2? This is basically to bring gas supplies to China ओवर लैंड. ये गैस चाइना में रशिया से, अगर क्वेश्चन आए कि ये किस लिए है, तो द पावर ऑफ साइबेरिया 2 इज टू ब्रिंग गैस सप्लाईज फ्रॉम रशिया टू चाइना. ओके, नाउ दैट वी हैव सीन दैट व्हाट आर द डिफरेंट एंगल्स, आप किस डायरेक्शन में सोच सकते हो इफ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. नाउ लेट अस सी चाइनीज कमिटमेंट. चाइनीज कमिटमेंट यहाँ पे क्या है, जी जिनपिंग हैज सेड कि देखो वेस्टर्न कंट्रीज तो कौन लीड करता है, यूएस
लीड करता है. एंड यूएस हैज इम्प्लीमेंटेड ऑल राउंड कंटेनमेंट एंड सप्रेशन ऑफ चाइना. यूएस तो वेस्टर्न कंट्रीज को सब लीड करता है और मेरे से तो उसका वर्सेस चलता है, मेरे से इतना तो दोस्ती यारी है नहीं. उसने सप्रेस कर रखा है चाइना को सब चीज़ों में. सो विच हैज ब्रॉट अनप्रेसिडेंटेड सीवियर चैलेंजेस टू द कंट्रीज डेवलपमेंट. इसलिए क्या अपन का इतना बढ़िया डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है. Okay, an all-encompassing partnership and strategic interaction in the world threatened by acts of hegemony, despotism and bullying. Bullying पता ना, सब बच्चे जो किसी का बाल खींच दिया, किसी को चुटी काट दिया, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे सब करते हैं ना. तो क्या है, what they are saying, in this world everybody, this world is full of people who are despotic, अपना ही रूल सिर्फ जमाना चाहते हैं, बुली करते हैं दूसरों को. सो दैट इज वाई ऐसे माहौल में लेट अस हैव मोर दोस्ती यारी. नाउ लेट अस कम बैक टू दिस क्वेश्चन. Critically examine the aims and objectives of SCO. What importance does it hold for India? So in such kind of a question, we can again start with, see, it is better not to start directly with critically. Always use introduction. Even in critically examined question, it is better to start with, say for example, इसमें SCO तो पहले mention करो कि SCO क्या है. Okay, so what is SCO? It is a Shanghai Cooperation Organization. Okay, now what is Shanghai Cooperation Organization? ये क्या किस तरीके का एक organization है? So it is an organization for international political, economic and security cooperation. Shanghai cooperation बोल रहे हैं ना, किस चीज का cooperation? ये सारे पार्टिसिपेटिंग जो कंट्रीज है, मेंबर कंट्रीज जो है, उन मेंबर कंट्रीज के बीच क्या कॉपरेशन लाना चाह रहे हो? प्लीज रिमेंबर, सी, वैसे तो सभी कॉपरेशन लाना चाह रहे, टूरिज्म से लेके टेरर अटैक रोकने से लेके ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग वी वांट टू ब्रिंग, बट यू हैव टू इंट्रोड्यूस ना. सो रिमेंबर दैट वी वांट टू ब्रिंग पॉलिटिकल, वी वांट टू, दैट डजंट मीन सोशल नहीं लाना है, पर यू हैव टू, you can frame the first introduction statement at least, no? So by definition only, political, economic and security cooperation. Here it is very important to mention security cooperation between the member nations. Okay, क्या होगा इससे? अगर हम ये cooperations maintain करेंगे, this will help the member countries to maintain peace, security and stability. ओके, इफ यू वांट टू ऐड मोर वर्ड्स, वो बोला था ना कि फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी अच्छा हो जाएगा, यू कैन यूज फर्दर मटेरियल इफ यू डू नॉट रिमेंबर सच काइंड ऑफ इंट्रोडक्शंस. ओके, बट ट्राई टू रिमेंबर एटलीस्ट फॉर द probable questions. Okay, next is, when did India become a member? Is India a member or not? Always in such kind of question you have to add this, that India became a permanent member of SCO. When? In 2017. Okay, now why are we, so these this is the definition, the what is SCO, when did India become a member, और cooperation organization बोल रहे, तो कई चीज का cooperation यहाँ पे हम लोग को करना है. Next, you see, this will also help to combat terrorism, extremism and separatism. So if you will have the security cooperation, that means by default it lends us to, you can minimize the and remove the terrorism. Okay, now see, coming to the next point, what is the next point? Aims and then objectives. So coming to the aims part, इससे क्या होगा? ये तो definition में ही आ गया. इससे क्या होगा? Obviously political cooperation बोल रहे हो तो better political relations होंगे, right? Better political relations होंगे तो better democratic political order internationally establish होगा. Yes or no? So these are again the hints to move forward and remember forward. फिर सिक्योरिटी बोल रहे हो तो इस विल हेल्प टू कॉम्बैट टेररिज्म एट एन इंटरनेशनल स्केल. ओके, so like this you can carry forward your question. Moreover, this will ensure joint efforts by all the member nations in the region, and this will improve the transport, tourism, transport connecting the countries, right? But then again, with the consent of the other countries, not by one country dominating the other country. Okay, then environment aspect, कल्चरल लिंकेजेस जो कि एंशियंट टाइम्स से है उसको मॉडर्न टाइम्स में भी मेंटेन करना है, एजुकेशन, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेट्रा. ओके, नाउ कम टू द ऑब्जेक्टिव्स. क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्रिटिकली एग्जामाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स.
So now coming to the objectives. See, now they have क्या question में क्या बोला था, critically examine करो, right? So now see, पहले तो देखो ऑब्जेक्टिव हो सकता है चाइना का ये सब के पीछे क्या है, एक ऑब्जेक्टिव बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है, yes or no? Everybody has heard about this, right? So in this BRI, when you are connecting the line through Indian territory occupied by Pakistan through POK, तो हमको अच्छा थोड़ी लगेगा, yes or no? So in the BRI project also there is already a difference between what we are saying and what you are saying. Then see, you yourself has done human right violation. लोग प्रोटेस्ट कर रहे, तुमने गोलियां चलवा दिया, तुमने बुलडोजर चलवा दिया, ऑलरेडी यू हैव डन ह्यूमन राइट वायलेशन. Education, information, free for all, available for all. You are trying to re-educate the people in Hong Kong. Re-education camp करो, library से चीजें हटा लो. All these things will only leave or decrease your international image. Next, in case of Ukraine, see, you are friends with Russia, so you could have been a better mediator, but you ended up being कि चलो मैं तो तुम्हारा ही बेस्ट फ्रेंड, बाकी सबको हटाओ. अच्छा. In case of Afghanistan also, there also you could have done better, right? So all these things globally तुम्हारा image इससे खराब होगा. And obviously in case of Pakistan as well, पाकिस्तान के केस में भी ऑलरेडी वी हैव सीन इन द न्यूज दैट एक तो टेररिज्म रोकने का बात कर रहे हैं, पर ऊपर से सपोर्ट करने के बारे में भी तो सुनाई दिया है. तो इसीलिए ये चीज हमको पसंद नहीं आया. तुम खुद ही पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की तरफ काम नहीं कर रहे हो, PSS नहीं कर रहे हो, है ना? तो इसीलिए वी आर नॉट लाइकिंग दिस. And in the COVID wave also we have seen that they did not give the full information to the world. The world is asking, दुनिया जानना चाह रही है पर तुम बता नहीं रहे हो. So that time also US had said कि चाइनीज वायरस बोल दिया, क्यों तुमने भी पूरा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द रोल. इट वाज आल्सो आस्क्ड इन UPSC. सो दैट इज द प्रॉब्लम. सो देखो हमारा सिंस एंशियंट इंडिया वी हैव हैड गुड टाइज. तुम्हारे यहाँ से हुएनसांग आया एंशियंट इंडिया में हर्षवर्धन के कोर्ट में, तब से हमारा अच्छा हिस्टोरिकल टाइज तो रहा है. सो यू कुड हैव बिल्ट अप अपॉन इट. सो ऑब्जेक्टिव्स अगेन वी कैन कंक्लूड दैट इफ यू बिल्ट अप ऑन एटलीस्ट, देखो ये तो हमको नहीं पसंद है, राइट? सो all of these, if you can build up upon the same ties, if you can make better decisions in the future, है ना? हमारे पास बॉलीवुड है, सबको यहाँ पे जो बॉलीवुड मूवीज एंड सॉन्ग पे इंटरेस्ट है, yes or no? इंडिया से लेके चाइना से लेके पाकिस्तान. सो रेदर मेक कल्चर एज अ पॉइंट टू हैव बेटर ऑब्जेक्टिव्स देन हैविंग साइलेंट ऑब्जेक्टिव जो हमको इतना शायद पसंद ना आए. This will help to improve our relation. So I hope you have seen how can we answer such kind of a question. Critically examine the aims and objectives of SCO. Okay, so how is it important for India? For India also, all this point will we have seen that all this point could be established, right? So that is how you can attempt this question. Now let us come to the next question. See, Union Minister Amit Shah has unveiled 54 feet tall statue of Lord Hanuman in which state? Recently Hanuman Jayanti asil নহয়, so etia hudise je ক'ত a 54 feet tall statue to yate unveil korise. So again in the home state. Where is the home state? Gujarat. So you see, Indian Home Minister Amit Shah has unveiled 54 feet tall statue of Lord Hanuman at a temple in Gujarat. It is one of the tallest Hanuman statue. Okay. Now you see, I was telling you about this Maldives, no? এতিয়া কি হয়, আমি দেখা পাওঁ কিছুমান ফটোজ আৰু ইমেজেছত যে মলদ্বীপছত একদম টুৰিজম ডেভেলপ হৈ আছে, মানুহ গৈ আছে তাতে. তাৰপিছত ছিংগাপুৰত পৰ্টছ, ইম্পৰ্টেণ্ট পৰ্টছ, গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ, গুডছ সেইফালৰ পৰা মুভ কৰি আছে, কিমান এটা বুষ্ট হৈ যায় ইকনমিটো, হয় নাই? এতিয়া ইয়াতে কি কোৱা হৈছে, আপোনালোকে যদি আন্দামান এণ্ড নিকোবাৰ দেখা পায়, তো ইয়াতে গ্ৰেট নিকোবাৰ আইলেণ্ড প্ৰজেক্ট এটা নিউজত আমি দেখা পাইছোঁ. আৰু এই যিটো গ্ৰেট নিকোবাৰ প্ৰজেক্ট আছিলে সেইটো ক্লিয়াৰেঞ্চো পাই গৈছিলে. Why it is again in news is that the eastern bench of the
National Green Tribunal জানে ইহঁতে মানে কি करे, they are the body who is responsible to see कि अच्छा ये ऐसा जगह है तो इसको हम क्लियरेंस दे कि ना दे, अप्रूवल दे कि ना दे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह शुरू कर सके. सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ऑन 3rd April ऑर्डर्ड अ स्टे लगा दिया है ऑन 72,000 crore ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. तो व्हाट वाज दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट कि हम भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल पोर्ट्स बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, टूरिज्म डेवलप होगा, इकोनॉमी डेवलप होगा, ऑल ऑफ दैट हम भी यहाँ पे करेंगे, right? And this project is known as Great Nicobar Island Project. So what is the problem? Why NGT has given this? Because in the past already, you see, there was a committee to there was a committee already. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change had given the clearance, but then now again a committee is being set up, that because NGT has not given the clearance, they have put a stay on the clearance. Why they have put it a stay on the clearance? Mainly because, understand, ami jano je we have environment biological hotspots, no? Northeast belt ase, western ghats ase, Andaman and Nicobar ase. So this region is already a biodiversity hotspot. It is a rich biodiversity area. Rich by gote belt to ahe plus minus. It is a rich biodiversity area, and if the habitat মানে য'ত থাকিব ইয়াতে থাকিব হয়নে, বহুতখিনি স্পিচিজ ইয়াতে থাকিব, যদি ইহঁতৰ থকা জাগাটো ডিষ্ট্ৰয় কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে কি হ'ব, সিহঁতে where will they stay? They will become on the verge of extinction. They are already endangered species. So this is the problem. যদি এলিফেণ্টৰ থকা এটা ৰিজাৰ্ভৰ মাজত এলিফেণ্ট কৰিডৰেৰে যে হাইৱে পাছ হৈ যায়, এলিফেণ্ট কেইটাই হাইৱেত মাজে মাজে ওলাই আহিব, বিকজ দে আৰ ট্ৰেইন টু ইউজ দোজ কৰিডৰ্ছ, ন? চ' সিহঁতে ওলাই আহিলে কি মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ডটো আকৌ বেছি বাঢ়ি যায়. চ' ইউ চি the Galathea Bay in the island is a nestling ground for birds, and the project area is part of coastal regulation zones. Coastal regulation zone or part hoy, so that is why this stay has been put. Abhi is pe aur study hoga, tab aage chal ke pata chalega ki kya karna hai. Moreover, this is also part of the tropical rainforest. Okay, now there is a term which you can write in your exams also, ecocide. Sorry, ecocide. You must have heard about killing the person. Here it is killing the environment, ecocide. Okay, and ecocide is a ecological nightmare. So that is why this is in question. What you should know from your exam point of view, you should know that what is the Great Nicobar Island Project. So it is an island project to have international ports and airports etc. in the Great Nicobar Island, so as to develop the tourism, economy etc. in the region. Okay, and the amount which is being invested is your 72,000 crore. However, at present the National Green Tribunal has put a stay because it is a rich biodiversity area, and if there are clearances, then the local tribes who stay in this particular area, the species who stay in this area, it will be a harm for them. So that is why now the discussions are going on. Okay, let us come to the next question. Chhattisgarh's Nagri Dubraj, which has recently got GI tag, is a variety of. আমি অসমতটো আমি ভাতে খাওঁ হয়নে, ভাত খাই বেছি ভাল পাওঁ হয়নে, so আমি ৰুটি খাই বেছি ভাল পাওঁ পাৰে, that is a different thing. So Nagri Dubraj is a species of rice. Okay, এইটো কৰ হয়, এইটো ছত্তীশগড়ৰ হয়, নাগৰি দুবৰাজ. এইটো যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া জহা চাউল আছে নহয়, ধুনীয়া গোন্ধ এটা ওলায়, বাসমতি চাউল এটা গোন্ধ এটা আছে, পাঞ্জাৱৰ পৰা এক্সপৰ্ট চবতকৈ বেছিকৈ হয়, আমি চাইছিলোঁ. চ' এইটো এটা এৰমেটিক ৰাইচ হয়. ঠিক তেনেধৰণে আৰু এটা চাব, জিৰা ফুল ৰাইচ. জিৰা ফুল ৰাইচেও GI টেগ পাইছিলে, আৰু দুবৰাজ ৰাইচ ইজ ছেকেণ্ড ব্ৰেণ্ড টু ৰিচিভ এ GI টেগ আফটাৰ জিৰা ফুল ৰাইচ. চ' মনত ৰাখিব, এটা জিৰা ফুল ৰাইচ আৰু 2 নম্বৰত ইয়াতে নাগৰি দুবৰাজ ৰাইচ. অ'কে,
let us come to the table of the day. আজি table of the day আমি important exercise বিলাক লৈছো মানে দুখন ইণ্ডিয়া আৰু এখন দেশৰ মাজত ধৰক মেৰিটাইম এক্সাৰসাইজ হৈছে স্লিনেক্স আমি দেখা পাইছিলো ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকাৰ মাজত মেৰিটাইম এক্সাৰসাইজ ঠিক তেনেধৰণে ইয়াতে যিমানখিনি ইয়াতে আৰ্মি বা নেভিৰ মাজত বা এয়াৰফোৰ্সৰ মাজত এক্সাৰসাইজ হয় তাৰে কোনখন দেশৰ হয়তো বহুতবাৰ সোধা হয় সো আমি এটো চাই আছো ঠিক আছে সম্প্ৰীতি ইণ্ডিয়া আৰু বাংলাদেশৰ হয় মিত্ৰ শক্তি ইণ্ডিয়া আৰু শ্ৰীলংকাৰ হয় প্লিজ ৰিমেম্বৰ মৈত্ৰী যদি এটা মনত ৰাখিব খুজে ইয়াৰ পৰা তেনেহলে মৈত্ৰী বহুত বাৰ এটো খুদা হৈছে মৈত্ৰী ইজ বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড থাইলেণ্ড এণ্ড ইণ্ডিয়া এণ্ড মংগোলিয়াৰ মাজত nomadic elephant okay ইণ্ডিয়া ইউএছৰ মাজত বজ্ৰ প্ৰহাৰ এণ্ড যুদ্ধ অভ্যাস has already been asked in exam গৰুদা শক্তি ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়াৰ মাজত হয় তাৰপিছত শক্তি এক্সাৰসাইজ ইণ্ডিয়া আৰু ফ্ৰান্সৰ মাজত হয় সূৰ্য কিৰণ ইণ্ডিয়া এণ্ড নেপাল এটো হুদা হৈছে ধৰ্ম গাৰ্জেন ইণ্ডিয়া এণ্ড জাপান এণ্ড হেণ্ড ইন হেণ্ড এক্সাৰসাইজ এটো হুদা হৈছে ইণ্ডিয়া এণ্ড চাইনা সো এট লিষ্ট হেভ এন আইডিয়া অফ মিত্ৰ শক্তি with Sri Lanka nomadic elephant Mongolia Yuddha Abhyas already I hope you know India and US Surya Kiran India and Nepal hand in hand exercise India and China okay now this was the question which I was telling you about this is from your GS paper 4 UPSC 2029 এখন ethicsৰ পেপাৰ হয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিওটো পজ কৰি লব পাৰে বা এটা স্ক্ৰিনশ্বট লব পাৰে কোৱেশ্চনটো ধুনিয়াকে পঢ়ি চাব কাৰণ এতিয়া আৰু কোভিড ঘূৰি আহাৰ কথা যেতে কৈ আছে ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন বাকি এখন পেপাৰত হলে যে আমাৰ হেলথ কেয়াৰ সিস্টেমটো আমি আৰু কেনে ধৰণে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰো ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো বেটাৰ আৰু এক্সেসিবল বনাব পাৰো হেতু কোৱেশ্চন হ'ব কিন্তু ethicsৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কি হ'ব পাৰে যে আপুনি যদি এখন হস্পিটেলৰ ধৰক ইনচাৰ্জ হয় বা এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ হয় এটা হে পাবলিক হস্পিটেলখনতটো কোভিডৰ সময়ত বহুত সংখ্যক মানুহ আহি যাব there will be a large number of people who will probably come in so in that particular situation how are you going to use your limited resources limited manpower your staff in understanding the situation and in resolving the situation কেনেকে এই কামটো কৰিব সো পঢ়ি চাব কোৱেশ্চনটো বহুত এটো অ্যাটেম্প্ট কৰি চাব পঢ়ি কিনে এটো এটা কেস ষ্টাডিৰ কোৱেশ্চন হয় কেস ষ্টাডিৰ এতিয়ালে মই সেপাৰেট ভিডিও এটা বনোৱা নাই গতিকে আপোনালোকে এবাৰ এটো ট্ৰাই কৰি চাব and very soon I will upload a video regarding the same and after that we will come back to this particular case আজি এটো আপোনালোকৰ এটা হোমৱৰ্ক কোৱেশ্চন হয় যেটো মই সদায় এন্ডত দিও আৰু আজি এটো পঢ়ি চাব যে আপোনালোকে কেনে ধৰণে এই কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিব পাৰে okay at least I will include the demo answer so that in the next class you are able to go through this particular case study আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ case study কেনে ধৰণে আপোনালোকে আনসাৰ কৰিব পাৰে okay so you have to say how you are going to use your resources and limited infrastructure to help the people to the fullest okay if yours is a private hospital where your justification and decision would remain the same so the ekhan public nohoy private holo tenle to same thakile hoy na so this you have to practice as a homework question okay thank you so much everyone আজি session to ami iman kini discuss korisu see you again in the next session tetialoi Monday to Saturday আমি যিমান খিনি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস কৰিছো হিখিনি আপোনালোকে সানডে এটা ৰিভিজন নিশ্চয় কৰি লব okay thank you take care stay blessed bye